वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं? जावा के और एक टॉपिक के ऊपर। व्हाट इज दैट? इंटरफेसेस। दिस इज कॉल्ड इंटरफेसेस. So what is interfaces? In Java provides an approach is known as interfaces to support and multiple inheritance. Although in Java classes we cannot be subclasses of more than one subclasses. It can be important of more than one interfaces, right? इंटरफेसेस में ये कंडीशंस लागू होते हैं एक के बाद एक के बाद एक. सो गाइस, एक चीज को क्लैरिफाई अभी करना चाहूँगा इन दिस वीडियो, राइट? इस पर्टिकुलरली इसी वीडियो में कि मैं कई बार ये करता हूँ कि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ के निकल जाता हूँ, उसको उड़िया में ट्रांसलेट नहीं करता. बट क्या है गाइस कि मैं बार बार आपको हिंदी में उड़िया में ट्रांसलेट करने तो यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, आपको समझाने के लिए बैठा हूँ. और इसमें समझने वाला जैसा कुछ है नहीं. जावा इज प्रोवाइड एन अप्रोच इज नोन एज इंटरफेसेस, right? What does it means? Java is provide an approach is known as interfaces to support and multiple inheritance. Inheritance को support करने के लिए रखा है. Very simple. Although in Java classes we cannot the subclasses of more than one subclasses. One subclasses से ज़्यादा नहीं रह सकता ना. So it is important than more than one interfaces. So इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि आपको हर एक चीज़ इंग्लिश से हिंदी तक का ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ तो मैंने इसको पहले ही बहुत सिंप्लीफाई तरीके से लिख दिया है यहाँ पे. अगर कोई अच्छे से पढ़ेगा भी एक दो बार तीन चार बार समझ जाएगा. फॉर दैट कोर्स मैं बार बार नहीं समझाता. ठीक है? अगर फिर भी आपको कुछ तकलीफ होती है, परेशानी होती है या फिर समझ में नहीं आते, आप लोग मेरे को बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है. पर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कि अभी इंटरफेसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. इसके बाद आएगा एग्रीगेशन, राइट? इसके बाद फिर स्ट्रिंग्स आएगा, आरएस आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं. जावा एक छोटा सा लैंग्वेज नहीं, बहुत इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. एक दो चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इन चीज़ों को बार बार एक बार दो बार तीन बार इतनी बार बोलने के बाद दिमाग मतलब बहुत सारा लंबा हो जाएगा कि बहुत मतलब कुछ दिमाग में घुसेगा ही नहीं. पहली चीज़ को दूसरी चीज़ बहुत बोरिंग हो जाएगा कि एक ही चीज़ कितनी बार एक बार मैंने हिंदी में बोला, फिर उसको इंग्लिश में बोला, फिर उसको इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन किया, फिर हिंदी में एक्सप्लेन किया. जो जो चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट है ना, उस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. अगर मैं उधर में एक्सप्लेन नहीं करता, कोड में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये यहाँ पे यूज होता है, ये यहाँ पे यूज होता है. आपको उतना ही सीखना है. ये चीज़ें थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा. तो आप लोग ऐसा मत सोचो कि मैं आपको आधे चीज़ें बता रहा हूँ, आधी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, आधी चीज़ें बस पढ़ के निकल जा रहा हूँ. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. पर जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें होगा, मैं उन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा. जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगा, उन चीज़ों को मैं स्किप करूँगा. पर स्किप करने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं ऐसे ही निकल जाऊँगा. नहीं, मैं आपको पढ़ाऊँ मतलब मैं खुद पढ़ूँगा, प्रोनाउंसिएशन करूँगा, आपको थोड़े थोड़े आइडिया दे दूँगा उसके बारे में, फिर निकल जाऊँगा. दैट्स इट. चलो आगे बढ़ते हैं. Inheritance basically a kind of classes like classes, interfaces, contents, method or provides of both, with the major differences. Uh, that is, the interface is defined as only abstract method that final fields as syntax as interfaces like this. This is the syntax of interfaces. Interfaces का syntax है ये. Then the syntax for variables, ये variables के लिए syntax है. फिर से समझिए. Only abstract method and final fields. सॉरी ये इसका नहीं, ये दिस इज द नॉर्मल सिंटैक्स ऑफ इंटरफेसेस. इंटरफेसेस का नॉर्मल सिंटैक्स है. पर यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. सिंटैक्स फॉर मेथड्स और वेरिएबल्स. वेरिएबल्स के लिए इसे यूज करेंगे, सिंटैक्स के लिए सॉरी मेथड्स के लिए इसे यूज करेंगे. ऊपर पढ़े ना बहुत सारे मेथड्स के बारे में, ये मेथड्स वो मेथड्स, उसी मेथड्स के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते चले जाएंगे. गॉट इट? फिर the return the note is all available for declare as contents constants whose values cannot be changed, and the method declare will the content only the declaration without the body, the classes and implements to the interfaces which defines as the codes for the methods. The classes and interfaces, this is the difference. What is classes, what is interfaces?
The classes is the member of class. Now, member of classes can be constant or variable. But in case of interface, members of interfaces is always declare as constant, as symbolic. यहाँ पे symbolic constants define होता है, पर in case of classes यहाँ पे constants और variables दोनों दोनों मतलब define होते हैं, मतलब यहाँ पे use कर सकते हैं. Then classes defined as a contents code of sorts of its method, that is the method can be abstract, non-abstract, but method it can be interfaces of abstract nature. There is no code as associated with them. यहाँ पे कोई भी कोड एसोसिएटेड नहीं है इसके साथ. देन क्लासेस का और एक एग्जाम मतलब और कुछ पॉइंट्स है. इट कैन बी इंस्टेंटेड बाय declaring object. It can't be instanted, right? And can be only inherited by classes. The last point was it can be used as various as access specifies like public, private, protected. It can only use the public access specifier, right? Okay, next topic. Extending interfaces like the classes interfaces can also be extended, that is an interfaces can substance facets from the other interfaces. This is the syntax, another syntax of extended interfaces. While interfaces can allow to extend its to the other interfaces, the sub interfaces can be defined as the sub interfaces are still interfaces to the classes. The interfaces they are separated by commas. Commas से separated होता है. Then the implementing interfaces. What is implementing interfaces? The implemented interfaces are used as superclasses whose properties are inherited by the classes. It is therefore necessary to create a classes the inheriteds to give an interfaces of classes name in implements interfaces name body of class name. Then a classes can be extend on another classes while implementing interfaces which classes is implement more than one interfaces. They are separated by comma से separated होता है. Then the implementation of interfaces that can take as various forms, such as these are the forms of implementation. This is the first one, this is second one, and this is the third one. Then here is the interfaces implementation, then second is classes extension, third was classes. But here classes of extension, second was classes, then third one is the interfaces, then fourth one is the interfaces, this is the last one, right? Classes. This is connections, right? ये connections बना रहा है अलग अलग तरीकों से. In the interfaces classes, see here is the second one, sorry, here is the first one, this is the second one, this is the third one. In D again अलग तरीके से. So this is the program of interfaces, program implementing interfaces. So इस प्रोग्राम के बारे में हम कहाँ पे बात कर रहे होंगे, यहाँ हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अच्छे से बात करेंगे, राइट, इस प्रोग्राम के ऊपर. सो इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं इन प्रोग्राम्स को. See, aggregation in Java. What is aggregation in Java? If the classes have entity reference to known as aggregation of prevents as has a relationship. The consider of situations employee objects contains many information such an ID name as email ID. It is contains more object named as address, which contains its own info such as city, state, zip code as given below. As an employee, int ID, string name, address. In such classes, employee has entry reference as reason as use of aggregation, code of reducibility. Then the example of aggregation is circle, operation of OP, double PI, then area int radius. Right? This is the example.
and this is the program that we use. See, what is the program? प्रोग्राम यूजिंग एग्रीगेशन, यहाँ पे एग्रीगेशन को लेके दिस इज द प्रोग्राम को लिखा गया है। क्या हम इस प्रोग्राम के ऊपर बात करें या फिर स्किप करके आगे चलें? या स्किप करके आगे चलेंगे, बिकॉज इसके बारे में भी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम बात करेंगे, राइट? इस चीज़ के ऊपर हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अच्छे से बात करेंगे। सो when to use aggregation, code use is also best achieved by the aggregation when there is no is a relationship, number is a relationship. Code reuse होता है is also based and achieved by an aggregation when there is a number is a relationship. When the number is in relationship, when use the aggregation code, right? तो aggregation code को कब use करना है? जब वो एक number there is a number is in relationship, वो number relationship में होगा तभी use करना है. Inheritance should be used in only relationship is the maintained through the lifetime of object involved, otherwise aggregation is in the best choice, right? Sample of aggregation. In the example, employee has an object of address of object contains information such as state, country, such as cases, relationship has a address. So after that, this is the problems. ये problems को use करते. So this is the, so ये एक program है. This is the program. इस प्रोग्राम के ऊपर भी हम बात करेंगे कहाँ पे? आज विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर जाके इसके ऊपर बात करेंगे. इनहेरिटेंस इज एन oops of concept which oops concept is कहाँ पे गया? Inheritance is a oops concept whereas in classes interacts with the state of behavior of the prevent classes. There is a two classes invoked. There are friend child relationship, whereas the classes which inherit insist from another classes is called as child classes or subclasses. Then the classes from which other classes inherits is called as parent classes or super classes. As I said, मैंने आपको ऊपर वाला super classes is the parent classes. This is the main classes. Sub classes are used to define all the classes, right? अंदर जो भी होगा, जैसे बोलते हैं ना कि एक परिवार है, परिवार में मुखिया माँ बाप है, माँ बाप के नीचे तीन चार बच्चे के नीचे उनके पोता पोती. तो दिस इज द सुपर क्लासेस इज द योर grandparents, grand old parents. Then you are in the mid of situations that you are play the role of subclasses. Like you are also parents, they are also parents, but they are super senior, you are senior. And those who are coming, मतलब those who are freshers, who are the freshers, like your parent, your childrens are the freshers now. So as like program में भी वही चीज होता है. They represent as a relationship between two classes. The child is type of parent classes. For example, as classes of animal, classes of dog. Here is the animal is the super classes. The dog. Here is the example, right? You can take that example. I don't want to discuss anymore about the examples. Aggregation is one of the way of achieving association. It is represented as the relationship. For example, if two three classes say interaction department of student, there is a three classes are associated with each other, where the institute of have of multiple departments or departments can be have of multiple students. It is unidirectional association. One relationship of example is departments have student, but vice versa. It is possible and thus the indirectional natural. The aggregation of both can be survive actually means ending of entity will not affect the other entry code of best achieving using the aggregation can be two different type of header applying the inheritance. We
we can say that solid isn't can hatchback is the we would have the super classes as I like public class can string, then string model, then double date of manipulation tone, then double class. Here is the cards having some commas of attributes of trade registration of model dom cost. Now we can came to the specific cars having the have their own attributes. The class have extends and have cargo com, then strings sterling, then classes extends can be extend of parallels, then strings certain type, then classes of sub extend can double fuel efficiency double space. A aggregation have a relationship that means a object itself sum of different objects. When you have taken of objects, it has other objects within the whole engine. So it is like as a has a whole has a wheels of dashboard engine classes engine. Offcasting and downcasting. See, this is the theory. आप ये चीज़ पढ़ लो. Offcasting और downcasting ये आप पढ़ लो. इस चीज़ को ज़्यादा explain करने की ज़रूरत नहीं है. So this is the examples that we are using.
जैसे आप लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम लिखा और इसको रन करवाया। अभी प्रोग्राम को मतलब समझने से पहले पहले इसके क्वेश्चन बचते हैं। राइट, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम। राइट आपने लिखा है, ठीक है। प्रोग्राम implementing multiple inheritance, right? This is, लिख लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। write a program write a program implementing multiple inheritance, this is the question। और ये उसका प्रोग्राम है। स्टार्टिंग से डिफाइन करते हैं क्या क्या चीज़ क्या है। इन फर्स्ट टू लाइंस हमने क्या डिफाइन किया? फर्स्ट इनहेरिटेंस, ठीक है। सेकंड तो लाइन में हमने दूसरा इनहेरिटेंस डिफाइन किया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया? जो दोनों इनहेरिटेंस लिखा था उसको इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले पहला इनहेरिटेंस लिखा, उसके बाद यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे उसको डिफाइन किया। फिर यहाँ पे थर्ड पे यहाँ पे इस वाले पे क्या हुआ कि यहाँ पे स्पेसिफिक मेथड, एक स्पेसिफिक मेथड को ऐड किया गया यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या हुआ? यहाँ पे एक को डिफाइन किया, दूसरे को यहाँ पे, ठीक है, दोनों क्लासेस को डिफाइन किया गया। फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक नई चीज़, मतलब एक स्पेसिफिक मेथड को यहाँ पे ऐड किया गया। यहाँ पे कुछ ऐड किया एक स्पेसिफिक मेथड को, और एज यूजुअल उसके बाद क्या हुआ? आपको पता है पब्लिक क्लास, यहाँ पे यूज़र इनपुट एग्जाम, यहाँ पे अपने अपने जो फाइल को यहाँ पे लिखा। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आर्क्स, स्ट्रिंग आर्क्स। फिर उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे मेथड्स को कॉल किया। अभी कुछ हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कुछ चीज़ें जहाँ पे हम कॉल करते हैं अपने मेथड्स को, तो यहाँ पे अपने मेथड्स को कॉल किया। फिर अपने यहाँ पे जो स्पेसिफिक जिसको ऐड किया था ना उसको फिर कॉल किया। जब कॉल किया, फिर से एक बार और बार बताता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट इनहेरिटेंस, सेकंड इनहेरिटेंस, इसको इम्प्लीमेंट किया। फिर यहाँ पे दोनों चीज़ों को डिफाइन हुआ। फिर यहाँ पे को ऐड किया, यहाँ पे आज यूजुअल पब्लिक क्लास, और इसको डिफाइन किया है क्योंकि उसको अगर एंटर नहीं करेंगे तो एरर दिखाएगा। फिर इन दोनों मेथड को जो भी इनहेरिटेंस है उनको कॉल किया गया, यहाँ पे एक को, यहाँ पे दूसरे को, यहाँ पे तीसरे को। यहाँ पे ये तीनों को एक साथ रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे ये स्पेसिफिक है इसीलिए यहाँ पे ऐड किया ना, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक है, इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर इसको और एक बार ऑन करके देख लेते हैं। तो एज यूजुअल ऑन करने के बाद क्या आता है? डॉग इज ईटिंग, डॉग से वर्ड्स ऑफ पॉपिस देन वुल्फ, यहाँ पे जो प्रिंट करना था उसको प्रिंट कर दिया। तो आज यूजुअल इनहेरिटेंस का यूज ऐसे ही होता है। तो आज हमने इनहेरिटेंस के ऊपर बातें की और इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश की, और इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम को खुद से करके विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर रन करके दिखाया। तो यार गाइस, आज खत्म होता है अपना इनहेरिटेंस का पार्ट जो भी था। तो आगे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, अपने लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करना है और खुद से चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए, मैं अपने हर एक लेक्चर में बताता हूँ कि मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो या गाइस, तो चलो आज का सेशन